Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with the beautiful journey of CA, CA Foundation, subject accounting. Accounting, as we know from class 11 and 12, accounting may, whenever there is a transaction, business transaction, accounting may we identify the two aspects, the two sides ट्रांजैक्शन के दो पहलू को अपने आइडेंटिफाई करके उनमें जो अकाउंट्स है उनमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है उनको आइडेंटिफाई करके एक अकाउंट को डेबिट दूसरे अकाउंट को क्रेडिट सो जब भी अपने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक आइटम के अकाउंट को डेबिट दूसरे आइटम के अकाउंट को क्रेडिट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सो डेबिट क्रेडिट यही दो किए आपने क्लास 11 12 में पूरे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट करते आए। नाउ क्या कभी कभी भी हमने क्लास 11 12 में कभी भी सोचा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेडिट? क्लास 11 12 में हमने गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा है एंड इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके अकाउंटिंग किया। तो मैं रूल्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिट, द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिट एंड द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेडिट। ठीक है, जानना है? ओके, सो द फर्स्ट डिस्कशन of CA Foundation Accounting is to understand the meaning of the word debit and the meaning of the word credit. The word debit is coming from the Latin word debitum. Yes, in Latin, debitum means what is due. So, if I say rupees 100 is due to Mr. X, this means Mr. X shall receive rupees 100 from the business. The word credit is coming from the Latin word creder. And in Latin, what does creder mean? Trust or faith. Now थोड़ा connect करो, जब भी अपने क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल का मतलब क्या? कस्टमर को उधार में अपना गुड्स बेच रहे हैं, यानी कस्टमर को हम लोग अपना गुड्स दे रहे हैं और उनसे तुरंत पैसा नहीं ले रहे हैं, कस्टमर को हम टाइम देते हैं। क्रेडिट सेल्स में हम कस्टमर को टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए, तो इमीडिएट पेमेंट रिसीव नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या है? बिजनेस एंटिटी हैज ट्रस्ट और फेथ on its customers that the customers will pay the amount after so many days or months. ठीक है, so that is why credit sales. Credit is coming from the Latin word creder. Creder in Latin means
ट्रस्ट और फेथ, राइट। सिमिलरली जब अपने किसी सप्लायर से क्रेडिट परचेजेस करते हैं, तो वी आर नॉट मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर इमीडिएटली on purchase, but the supplier is giving away the raw materials or the goods to the business entity. Supplier is giving the business time period to make the payment. So the supplier has faith, trust कि पेमेंट मिल जाएगा उसको. So that is why the word credit and purchases, credit purchases. Clear है? Yes or no? Okay. So debit is coming from the Latin word debitum. Debitum in Latin means what is due. Credit is coming from the Latin word creder. Creder in Latin means trust or faith. Credit sales means उधार में कुछ को बेचा, यानी करेक्ट. समझ में? क्लियर है? कस्टमर पर कि कस्टमर विल मेक द पेमेंट आफ्टर सम डेज और मंथ्स. हाँ, एंट्री वाला एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. वेट. क्लियर है? अभी हाँ, अभी जस्ट हमने क्या डिस्कस किया? मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट. तो इसमें क्रेडिट मींस क्रेडिट. क्रेडिट इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर. लैटिन में क्रेडर मींस द ट्रस्ट फेथ. सो अपने क्रेडिट सेल्स करते हैं, इसका मतलब कस्टमर को अपना गुड्स दे दे रहे, बट उनसे पेमेंट तुरंत नहीं लेते हैं, उनको टाइम देते हैं. से 90 डेज का टाइम दिया, तो बिजनेस का विश्वास है, ट्रस्ट है कस्टमर पर कि कस्टमर उसको 90 डेज में पेमेंट कर देगा. सो दैट इज व्हाई क्रेडिट सेल्स. सिमिलरली क्रेडिट परचेजेस, उधार में सप्लायर से गुड्स परचेज किया, तो सप्लायर को विश्वास है कि उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा आफ्टर सम डेज और मंथ्स, जितना भी वो टाइम दिया है बिजनेस को पेमेंट करने के लिए. सो वो ट्रस्ट फेथ है. क्लियर? ठीक है. करेक्ट. नाउ accounting is based on certain rules. Why there are rules? Rules are there to maintain uniformity. यानी सारे बिजनेस एंटिटीज एक ही रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग करेक्ट होगा. ठीक है? सो रूल्स, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. Rules of accounting means rules. Accounting is based on certain rules, and these rules are rules of debit and credit. These are rules of debit and credit. लिखो. So rules of debit and credit may there are two sets. Two sets. Set one, the golden rules. The golden rules of debit and credit. Set two, the modern rules of debit and credit. देखो, अपने अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स को फॉलो करके करे या मॉडर्न रूल्स को फॉलो करके करे, एक ही बात है. रिजल्ट इफेक्ट विल बी द सेम. सो इट इज अप टू अस that we follow
गोल्डन रूल्स और दी मॉडर्न रूल्स। दोनों में से कोई भी रूल्स को फॉलो करके करेंगे तो रिजल्ट इफेक्ट एक ही आएगा। तो इट इज अप टू अस, वी फॉलो गोल्डन रूल्स और वी फॉलो मॉडर्न रूल्स। Modern rules are definitely, my personal belief is that modern rules are easy to follow while doing accounting. तो अपने भी पूरा अकाउंट्स जो करेंगे, we shall be following the modern rules of debit and credit. ठीक है, so first let us discuss this is the notation. So first the golden rules. ठीक है, now to apply rules of debit and credit, we first need to classify the accounts. यानी रूल्स अप्लाई करने से पहले अपने को अकाउंट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। रूल्स को अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ता है? अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वी अप्लाई द रूल्स। करेक्ट। सो रूल्स अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू क्लासिफाई। सो एप्लीकेशन ऑफ रूल से पहले स्टेप इज कि पहले का स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जितने भी अकाउंट्स अपने मेंटेन कर रहे हैं उनको अपने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स। क्लियर? एंड व्हाट आर दे? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। So there are three classification of accounts: personal accounts, real accounts, and nominal accounts. Right? So जितना भी accounts अपने maintain कर रहे हैं, यानी जिन भी items का हिसाब accounts अपने maintain कर रहे हैं books of accounts में, तो उनकी accounting करने के लिए rules of debit and credit apply करने के लिए पहला step is classification. तो सारे अकाउंट्स को अपने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो पर्सनल अकाउंट इज यूज्ड फॉर व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स? एज द नेम पर्सनल, सो इट इज यूज्ड फॉर ऑल दी पर्सन्स जिनका बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन होता है। पर्सन्स एज इन persons can be natural persons, human beings made by God, living beings, or can be artificial persons like a company, partnership, any business entity, institution, college, school, bank, cooperative societies. All these are artificial persons. Right? समझ में आ रहा है? So personal accounts में we classify all the accounts of the persons जिनका business के साथ transaction होता है। And persons में the persons can be natural person or artificial person. There is one more subclassification which we are going to understand today itself later. Subclassification of personal. So one is natural, the other is artificial,
एंड देयर इज वन मोर विच वी शैल अंडरस्टैंड अभी तुरंत थोड़ी देर में. सो पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स के अकाउंट क्लासिफाई हो जाते हैं. नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रियल अकाउंट. This classification is used to classify accounts relating to the assets. Real accounts, this classification is used for all the assets. So why the classification is called real? Because assets क्या होता है? Assets business use करता है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, जिससे बिजनेस को रियल बेनिफिट्स मिलता है. जैसे मैं ये चेयर्स एंड टेबल्स यूज कर रहा हूं अपने कोचिंग बिजनेस के लिए, तो आई एम गेटिंग रियल बेनिफिट्स बिकॉज स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड डूइंग द क्लास. आई एम यूजिंग दिस प्रोजेक्टर, दिस इज एन एसेट, गेटिंग रियल बेनिफिट because students can see whatever I am writing. Clear? So assets use करके business को benefits derive होता है, real benefits. So that is why the word real, name of the classification is real. And सोचो, अपने कोई भी बिजनेस एंटिटी, जैसे कोई भी ऑफिस में अगर आप एंटर करते हैं, जैसे इसी क्लासरूम में, दिस इज द बिजनेस एंटिटी. तो ये क्लासरूम में आप अपने आंखों से क्या क्या देख पा रहे हैं? व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं, चेयर टेबल देख पा रहे हैं, लैपटॉप देख पा रहे हैं, कबर्ड्स देख पा रहे हैं, सेंटर जिस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग, बिल्डिंग जिस लैंड पर है वो लैंड, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर, फैंस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये सब चीज देख पा रहे हैं अपने आंखों से. कैन यू सी व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल which the owner has invested in the business? Can you see the amount of capital? Answer is no. You cannot see the amount of capital. कि मैंने कितना कैपिटल लगाकर ये बिजनेस को स्टार्ट किया था. नो. कैन यू सी द अमाउंट ऑफ लोन द बिजनेस एंटिटी हैज टेकन? नो. The way we can see all the assets, we cannot see the amount of capital or any other liabilities. So what we can see reality में, reality रियल में क्या देख पा रहे अपने बिजनेस के सारे assets. तो इसीलिए सारे assets का क्लासिफिकेशन को नाम दिया है रियल अकाउंट्स. So real accounts stands for all the assets. Assets can be tangible or intangible, any. Next. So personal accounts में accounts of all the persons, natural, artificial. Real accounts में accounts of all the assets, tangible, intangible. Now nominal account. Nominal means what? Very basic, common. ठीक है, वेरी बेसिक. जैसे अपने क्लास 12 में इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़े थे, तो शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू याद है? सो दैट इज द बेसिक अमाउंट ऑफ एनी शेयर. तो नॉमिनल मींस वेरी बेसिक. अब बिजनेस में वेरी बेसिक क्या सब चीजों की चर्चा होती है? कोई भी बिजनेसमैन डे टू डे बेसिस में क्या क्या बातें करता है डेली बेसिस में, कि ये सप्लायर का इतना पेमेंट करना है, इतना का रॉ मटेरियल्स परचेज करना है, आज कस्टमर को इतना का सेल हुआ, ये कस्टमर से इतना पेमेंट लेना है, मेरा इतना खर्चा लग गया, वहां से गुड्स को उठाना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. तो बिजनेस में डेली बेसिस में वी टॉक अबाउट ऑल दी
expenses and the incomes. Very basic to any business, expenses and income. So all the accounts of expenses and incomes, all the expenses and incomes account are classified as nominal accounts. So nominal accounts is used for all the expenses, losses, income, gains and revenues. Right? Okay. तो पर्सनल में we have natural person to artificial person. Now फटाफट tell me, bank bank is artificial person, Mr. Ram is natural person, Mr. Ram is natural person. Clear? The Bhawanipur Education Society College is artificial person. ICICI Bank is artificial person. Reliance Industries Limited is Mr. Shyam is natural person. तो सारे पर्सन्स के अकाउंट को अपने पर्सनल अकाउंट्स, राइट, तो किसी भी पर्सन के साथ, कोई भी पर्सन के साथ, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, किसी भी पर्सन के साथ बिजनेस का किस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, लेना देना, आपने कॉलेज को फीस पेमेंट किया, कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन. क्लियर? तो किसी भी, हाँ, क्या चीज, हाँ वो आएगा, एक और सब क्लासिफिकेशन है वो अपने डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले रूल्स को समझते हैं. तो रूल्स को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, रूल्स अपने क्यों सीख रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए समझ रहे हैं. सोचो पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ बिजनेस का किस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन, गिव एंड टेक. सो a person a person will either be a receiver or a giver. Clear? Will either be a receiver or a giver. अब रिसीवर के केस में पर्सनल अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें, वी नो द रूल्स, वी नो द रूल्स taught in class 11. The golden rule of debit and credit in case of personal account is debit the receiver, credit the giver. So have we ever wondered why we debit receiver and credit giver? Why is not the rule like debit the giver and credit the receiver? यानी उल्टा रूल क्यों है, ऐसा रूल क्यों है, यानी रिसीवर को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते, गिवर को क्रेडिट क्यों करते हैं, डेबिट क्यों नहीं कर सकते. Why such a rule कि receiver is to be debited and giver is to be credited? Why debit the receiver, credit the giver? इसका लॉजिक is hidden in the meaning of the word debit and credit. The word debit is coming from the Latin word debitum. In Latin, debitum means what is due. So if I say rupees 100 is due to Mr. X, Mr. X shall receive rupees 100 from the business.
So Mr. X is the receiver, debit the receiver. Clear है? Why credit the giver? Say take the example of a bank loan. Bank has given you loan. So bank has given you loan. Bank is the giver. Bank has given you loan on the basis of a trust and faith that the business entity shall repay the loan after 5 years. So there is a trust of the bank on the business at the time of giving loan. So when bank is a giver, it is having a trust on the business that the business will repay the loan after say 5 years. अब बैंक को ये ट्रस्ट आया कैसे? सो बैंक को ये ट्रस्ट आया कैसे? बैंक ने आपसे सिक्योरिटी मॉर्गेज लिया है, हाइपोथेकेशन लिया है। आपसे बैंक ने कुछ एसेट्स को गिरवी रखवाया है। अब गिरवी रखवाने का मतलब नहीं कि आपने अपना एसेट्स बैंक को बेच डाला। जस्ट कुछ टाइटल डीड्स आपने बैंक के पास रख दिया है। रखने से क्या होता है, बैंक को एक विश्वास आ जाता है कि कल अगर आप उसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक कैन सेल आउट योर एसेट्स एंड रीपे द लोन। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है on taking that security or mortgage. So that trust is built. But इसमें तो आपने अपना एसेट बेचा नहीं ना until you do not repay the loan. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी रखने का मतलब जस्ट टाइटल डीड्स रख देना बैंक के कस्टडी में. You are not selling away your asset. Bank will use that title deeds only when the borrower fails to repay the loan. Otherwise, bank will not use that title deeds. Right? हाँ, करेक्ट. सो बैंक को वो ट्रस्ट आ गया, सिक्योरिटी लेकर, हाइपोथेकेशन लेकर एक ट्रस्ट आ गया. सो बैंक इज गिविंग यू लोन. सो बैंक हैज अ ट्रस्ट at the time of giving loan that the borrower shall repay the loan to the bank after say 5 years. So there is a trust, creditor, credit. So giver has a trust, giver has a giver has a trust. So that is why credit the giver. Okay. Real account stands for all the नहीं नहीं, वो क्वेश्चन आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टाइम पूछो, वो अलग डिस्कशन हो गया. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, वो अभी इधर में नहीं कर सकते. वेट. सो रियल अकाउंट में सारे असेट्स के अकाउंट क्लासिफाई हो जाते हैं. ये सोनो. सो रियल अकाउंट में सारे असेट्स, रियल अकाउंट. क्या चीज? हाँ, दिस आई टेल यू. ठीक है, अभी अपने कहां पर आ गए? रियल अकाउंट में सारे एसेट्स. एसेट्स यानी टैंजिबल, इंटैंजिबल. तो सारे एसेट्स. क्लियर?
तो एसेट 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 का बिजनेस में एसेट का बिजनेस में किस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है? मतलब बिजनेस में एसेट का क्या टाइप का ट्रांजैक्शन होता है? बिजनेस एसेट को परचेज करता है, परचेज करके एसेट का यूज जब हो जाता है से 5 साल 10 साल में, देन उस एसेट को बेचकर नया एसेट खरीद लेता है। तो बेसिकली बिजनेस में एसेट comes in at the time of purchase and goes out at the time of sale. So business entities purchase asset for use in the business. After the use is done, से 5 साल 10 साल एसेट को यूज करने के बाद एसेट जब पुराना हो जाता है तो उसको बेचकर नया एसेट परचेज कर लेते हैं। तो एसेट बिजनेस में परचेज सेल, परचेज मीन्स कम्स इन, सेल मीन्स गोज आउट। क्लियर है? आते हैं उसमें, ये क्वेश्चन पेंडिंग है। सो कम्स इन goes out, तो रियल अकाउंट के केस में वी नीड टू सी एसेट कम्स इन और एसेट गोज आउट। वी नो द रूल। रियल अकाउंट के केस में द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दिस? Why debit what comes in? Why not we credit what comes in? Why credit what goes out? Why can't we debit what goes out? So let us understand. Iska bhi reason is hidden in the meaning of the word debit and credit. Iska bhi meaning is hidden in the word debit. Reason is hidden in the word, in the meaning of the word debit and credit. समझने के लिए कोई भी एक एसेट का एग्जाम्पल दो, कोई भी एक एसेट का एग्जाम्पल दो, कोई भी एक एसेट का एग्जाम्पल दो। से मशीन, तो व्हाई डू यू परचेज मशीन? व्हाई अ बिजनेस एंटिटी विल परचेज मशीन? व्हाई? सो व्हाट बेनिफिट? करेक्ट, मशीन से प्रोडक्शन होगा। सो जब भी अपने सप्लायर के यहां से मशीन को परचेज कर रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं कि मशीन को फैक्ट्री में इंस्टॉल करके प्रोडक्शन करेंगे, राइट? सो मशीन परचेज क्यों किया? प्रोडक्शन करने के लिए। फर्नीचर क्यों परचेज करते हैं? ऑफिस में यूज करने के लिए। फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री का काम करने के लिए। तो देखो, जब भी हम लोग कोई भी एसेट को परचेज करते हैं, एसेट परचेज क्यों करते हैं? उसको बिजनेस पर्पस में यूज करने के लिए। यूज करने से क्या होगा? बिजनेस यूज करने से क्या हो रहा है? बिजनेस इज गेटिंग अ बेनिफिट। सो वेन एवर एन एसेट इज परचेज्ड, why an asset is purchased? To use it in the business। बिजनेस में उस एसेट को यूज करके बेनिफिट मिलेगा। So whenever an asset is purchased, a benefit becomes due. A benefit becomes due. The key word is due.
Debit is coming from the Latin word debitum. In Latin, debitum means what is due. So whenever an asset is purchased, a benefit becomes due to the business. Asset is purchased means asset comes in. देखो comes in में what do we do? Debit. Clear? So debit what comes in. Debit what comes in. Clear है? Next, credit what goes out. Goes out means you are giving that asset, giving away that asset, giving away, giving. Credit the giver, giving away. So credit what goes out. Okay, clear. Then nominal accounts. Yeah, you are giving away that asset, goes out, credit. Clear. So nominal accounts may we have all the accounts of expenses, losses on one side, incomes, gains, revenue on the other side. Clear है? So nominal accounts में what is the rule? What is the rule? Debit all expenses and losses, credit all income, gains and revenue. So why debit all losses and expenses? Why can't we credit all expenses and losses? Why do we credit all incomes, gains and revenue? Why can't we debit income, gains and revenue? What is the reason? The reason is hidden in the meaning of the word debit and credit. So now to understand, give me an example of any asset. Give me an example of any asset. Asset, sorry, expense, not asset, expense. My mistake. बोलो. Any expense. Salary. Salary. So why do we incur salary expense? Why a business entity incurs salary expense? Because सैलरी एक्सपेंस करेंगे तभी एम्प्लॉइज बिजनेस एंटिटी में काम करेंगे, यानी बिजनेस एंटिटी को उन एम्प्लॉय का सर्विसेज मिलेगा। तो वो सर्विसेज पाने के लिए, बिकॉज बिजनेस में तो काफी सारा काम होता है ना, तो काम करने के लिए लोग चाहिए। तो लोगों को आप पैसा दोगे, सैलरी पेमेंट करोगे, तभी वो आपके लिए बिजनेस के लिए काम करेगा। तो एम्प्लॉय का सर्विसेज पाने के लिए हम सैलरी का एक्सपेंस इनकर करते हैं। एक और एग्जांपल, रेंट। रेंट का एक्सपेंस क्यों इनकर करते हैं? टू यूज द प्रेमाइसेस फॉर डूइंग बिजनेस। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस क्यों इनकर करते हैं? टू प्रमोट, टू इंक्रीज सेल्स। So whenever we incur any expense, a benefit is becoming due to the business. The key word is due. Debit is coming from the Latin word debitum. Latin में debitum means what is due. So whenever any expense is incurred, always the benefit becomes due to the business. Salary expense कर रहे हैं, employee का services, that benefit becomes due.
रेंट एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, वी गेट प्रेमाइसेस टू यूज, दैट बेनिफिट बिकम्स ड्यू। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन, दैट बेनिफिट बिकम्स ड्यू। क्लियर? So the key word is due. Benefit becomes due. Debit is coming from the Latin word debitum. Debitum means what is due. So all expenses are to be debited. Income, gains, revenue credited. Why? मेजर इनकम का एग्जाम्पल दो। कोई भी बिजनेस एंटिटी का द मेजर इनकम इज थ्रू सेल्स। सेल्स किसको करते हैं? टू whom do we make sales? Sales are made to customers. So why does a customer comes to you, or why does a customer comes to your business entity? Because the customer has a trust or faith in the goods or services provided by the business. So customer business entity में क्यों आते? Because customer को business entity के गुड्स या सर्विसेज के क्वालिटी पर विश्वास है। विश्वास, फेथ, राइट? तो इनकम क्यों होता है? क्योंकि इनकम का जो सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है, जैसे आपने मेरे को फीस का पेमेंट किया, दैट फीस इज एन इनकम, दैट फीस इज एन इनकम फॉर मी। सो यू हैड ए ट्रस्ट ऑन मी कि सर इज गोइंग टू टीच मी वेल, कंप्लीट द सिलेबस, एंड आई विल बी थ्रू माई सी ए फाउंडेशन, मैं पास हो जाऊंगा। So that trust, you have trusted me, your father trusted me while making the payment. Yes or no? So there is a trust factor. So वो मेरा income क्यों हुआ? Because customer का trust है। Clear है? So incomes credited. Why? Credit is coming from the Latin word credit, trust, faith, income. Okay. Now one question. One very important question. So मजा आया सुनकर? डेबिट क्रेडिट का रूल्स के पीछे का रीजन, reason as in why do we debit the receiver, credit the giver, and so on. अब एक क्वेश्चन है, जैसे एक्सपेंसेस को डेबिट, ये एक्सपेंसेस को डेबिट इसीलिए करते हैं बिकॉज कोई भी एक्सपेंस इनकर करने से बिजनेस को एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि सैलरी का एक्सपेंस करेंगे तो एम्प्लॉय का सर्विसेज मिलेगा, सो दैट बेनिफिट बिकम्स ड्यू टू द बिजनेस। एसेट के केस में which is classified in real accounts, asset के केस में whenever an asset is purchased, say machine is purchased, so machine purchase करके production कर पाएंगे, that benefit becomes due. So machine is purchased यानी machine comes in, purchase क्यों करते हैं? production करने के लिए, that benefit becomes due. तो machine comes in debit करते हैं। So the question is, what is the difference? Reason is the same, but what is the difference? What is a basic difference? Correct. Asset के केस में जो benefit becomes due है, that is for a longer duration. And expenses के केस में जो benefit becomes due है, that is for a shorter duration. Because every month to get the services of the employees, we need to incur salary expense. But when we purchase machinery, that machinery can be used in the business for many years. So the benefit becomes due for a longer duration period in case of asset when it is purchased. Clear? Now one more question. Very important. समझ में आया?
एक क्वेश्चन एकदम सोच कर अच्छे से बताना। तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते बिकॉज द बेनिफिट बिकम्स ड्यू। सैलरी एक्सपेंस करके we get the services of the employee, that benefit becomes due, right? Why do we debit losses? What benefit becomes due to losses? Why do we debit losses? What benefit becomes due to losses? जैसे salary expense करके the benefit is we get the services of the employees. So that benefit becomes due. But what about losses? What benefits become due when any business entity incurs a loss? You didn't thought. You just listened to whatever I said. You enjoyed the knowledge, but you did not thought beyond the box. सपने को सी करने के लिए आउटसाइड द बॉक्स भी सोचना, हटके। बिकॉज टेल मी, क्लास 11 12 में इस तरीके से डेबिट क्रेडिट के रूल्स का रीजन बताया था। रीजन बताया था। रीजन कि रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन क्यों होता है, ये बताया था नहीं। सो हट के नॉलेज मिला। हट के सोचना अपने को पूरे सी जर्नी में। बताओ लॉसेस का अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होता है? क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स के लॉसेस का अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होता है अपने? नॉट जनरल एंट्री, अल्टीमेट ट्रीटमेंट। हाउ डू वी ट्रीट फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस? सपोज अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए एंड वी गेट अ नेट लॉस। सो वो नेट लॉस का अपने क्या करते हैं लास्ट में? कैपिटल से माइनस। सो कैपिटल इज बिजनेस कैपिटल कहाँ होता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में। सो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, राइट? कैपिटल इज अ liability for the business. Separate entity concept. Business is separate, owner is separate. Biz owner owner जो मनी बिजनेस में लगाता है बिजनेस के लिए, वो एक लाइबिलिटी है, कैपिटल। सो नेट लॉसेस को आप कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपने फाइनल अकाउंट्स में किए थे इन क्लास 11। सी फाउंडेशन में भी करेंगे। तो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। कैपिटल इज व्हाट? अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। सो बिजनेस का लाइबिलिटी डिक्रीज। सो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से बिजनेस को अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। गॉट माय आंसर? सो दैट बेनिफिट इज बिकमिंग क्लियर। समझ में आ रहा है, राइट? अच्छा, गोल्डन रूल्स को अपने ओल्ड इज गोल्ड, वी नो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है? सो ओल्ड इज गोल्ड यानी गोल्डन रूल्स काफी टाइम से फॉलो हो रहे हैं। सो गोल्डन रूल्स को अपने करेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन गोल्डन रूल्स कह के नहीं आएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच। नो, डिफरेंट नहीं है। गोल्डन रूल्स में एक चीज पेंडिंग है। क्या चीज पेंडिंग है? ये पूरे डिस्कशन, गोल्डन रूल्स के डिस्कशन में वन थिंग इज पेंडिंग। व्हाट इज दैट? विच यू आर पॉइंटिंग आउट टू मी एवरी ना। पर्सनल का थर्ड सब क्लासिफिकेशन इज, हाँ, करेक्ट। सो दो क्वेश्चन पेंडिंग है। सो पर्सनल अकाउंट का थर्ड सब क्लासिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मीनिंग
इसको बहुत अच्छे से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मींस रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन। जैसे कि if the salary is outstanding, means what? A certain amount of salary is payable to an employee, to the employees. So outstanding salary is representing the employee to whom the salary is payable. What is outstanding rent? Outstanding rent is the amount of rent to be paid to the landlord, due to be paid to the landlord. So it is representing the landlord to whom the rent is payable. Clear? Prepaid insurance premium, which means you have paid the insurance premium in advance, which means the business entity is yet to receive the services, the benefit is yet to receive. Yet to receive the services from whom? Insurance company. So prepaid insurance is representing the insurance company, the insurer from whom the services are yet to be received, representing the insurer. Insurer कौन है? Personal, person. Insurance company is person. Landlord is what? Person. Employee is what? Person. So they are representing any person. Outstanding salary is representing the employee. Employee is a person to whom the salary is to be paid. Salary is payable. Outstanding rent is representing the landlord. Landlord is a person to whom the rent is to be paid. Payable. Prepaid insurance is representing the insurer to whom the payment has been made in advance, जिससे अपने को सर्विसेज मिलेगा, मिलने वाला है. Clear? So what conclusion can we draw from this discussion? One conclusion we can draw from this discussion is any outstanding expense, any prepaid expense are classified as personal accounts. Prepaid expense is an asset. So listen, correct. Any outstanding expense or prepaid expense is classified as representative personal account. Correct. Correct. Yes. अब जैसे एक्सपेंसेस के लिए जो लॉजिक अपने यूज किया, सेम लॉजिक वी कैन यूज फॉर इनकम एज वेल. यानी the next conclusion that we can make is income received in advance या फिर accrued income, they are also falling under this category, representative personal accounts. Income received in advance is representing the recipient to whom the services are yet to be given. Accrued income is representing
the person from whom the money is yet to be received for the services already provided. So representative पर्सनल. तो यानी शॉर्ट में क्या कर सकते हैं अपने याद कि सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance are representative personal account. क्लियर है? सो पर्सनल अकाउंट के तीन सब क्लासिफिकेशन है. नेचुरल पर्सन, लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स. लिविंग बींग्स में तो एनिमल्स भी आ जाता है. ठीक है. सो नेचुरल पर्सन मींस क्या चीज? हाँ, एक सेकेंड, वो पॉइंट क्लियर करते हैं. सो पर्सनल अकाउंट में देर आर थ्री सब क्लासिफिकेशन. नेचुरल पर्सन, ऑल द ह्यूमन बींग्स. आर्टिफिशियल पर्सन, अदर देन ह्यूमन बींग्स. जैसे कोई भी बैंक, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एंटिटी, कमर्शियल एंटिटी, कंपनी, पार्टनरशिप, LLPs, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अच्छा, एक एग्जांपल कर लेते हैं. जैसे इफ आई से सैलरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्लियर हो जाएगा. सपोज इफ आई से सैलरी, just the word salary. Salary. So how do you classify salary? It is an expense. So classification is nominal account. But if I say outstanding salary, the classification is in the personal account, it being a representative personal account. If I say prepaid salary, personal. If I say just salary, only salary, if I say nominal. If I say rent, nominal. If I say outstanding rent, personal. If I say prepaid rent, personal. If I say interest received, nominal, income. If I say accrued interest, personal. If I say commission, nominal. If I say commission received in advance, personal. अभी क्लियर हो गया वो डाउट जो अभी आया था? क्लियर है वो? नाउ सेकेंड पॉइंट, एज यू आस्क्ड कि सर लाइबिलिटीज, बिजनेस का जो जनरल लाइबिलिटीज होता है वो किधर क्लासिफाई होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो खुद सोचो. लाइबिलिटीज इज ऑपोजिट ऑफ असेट्स. लाइबिलिटीज इज एंटी एसेट, है ना? तो लाइबिलिटीज रियल अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज रियल अकाउंट इज फॉर दी एसेट्स. तो लाइबिलिटीज रियल अकाउंट में नहीं आएगा. नॉमिनल अकाउंट में सारे expenses, losses, income and gains. Liability is not any expense. Liability is not any income. So it will not be classified in. So where it will be classified? Personal. So all the liabilities are by default. All the liabilities on earth are by default classified in personal accounts. Liabilities means what? उधार. तो उधार तो अपने किसी ना किसी पर्सन से ही ले सकते हैं ना. वेरी लॉजिकल. हाँ, वो चीज, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. क्लियर? समझ में आ रहा है ना? राइट. सो लाइबिलिटीज मींस उधार. उधार, कर्ज. तो ये तो किसी ना किसी पर्सन के से ही ले सकते हैं. राइट. यानी इसका जो लाइबिलिटीज का ट्रांजैक्शन है वो किसी ना किसी पर्सन के साथ ही हुआ होगा. उसने आप पर एहसान किया है कर्ज देकर, तो वो एक कोई पर्सन ही कर सकते हैं.
तो पर्सनल अकाउंट्स में क्लासिफाई होगा, क्योंकि रियल अकाउंट में तो सारे एसेट्स आ जाते हैं, लाइबिलिटीज असेट का एंटी है। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स एंड रेवेन्यूज आ जाते हैं। लाइबिलिटी इज नॉट एनी एक्सपेंस और इनकम, सो लाइबिलिटी इज व्हाट? पर्सनल, बिकॉज लाइबिलिटी मींस उधार, जो कि आपने किसी ना कोई पर्सन से लिया है। तो लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट्स। डन? क्लियर है? ओके, आते हैं उसमें। एक क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, तो क्या वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होगा या नहीं? ये पॉइंट अपने उठाएंगे आफ्टर वी डिस्कस द मॉडर्न रूल्स। ठीक है? क्लियर? ये पॉइंट बाकी, यही पॉइंट खाली बाकी है, और बाकी सारा पिछला डाउट इज ऑल क्लियर। ओके, सो ये पॉइंट अपने उठाएंगे। क्वेश्चन क्या, डाउट क्या है कि सर प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, व्हाई? बिकॉज एक्सपेंसेस का पेमेंट हो चुका है, सर्विसेज मिलना बाकी है, तो वो बेनिफिट अपने को मिलेगा। सो प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, so can it be classified in real accounts? Because real account is for all the assets. This is the question. So why have we classified prepaid expenses into personal account? And also the same question is for accrued income. Clear? Chalo. Because accrued income means services have been provided and we are yet to receive any money. ठीक है, तो ये पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे आफ्टर वी हैव understood the modern rules, the second set modern rules of debit and credit. ठीक है? ओके, सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने से पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वेरी नाइस, वेरी नाइस, इंप्रेसिव classification. So first we need to understand how accounts are classified according to the modern rules. So according to the modern rules, accounts are classified in 5 categories. And what are they? Assets, liabilities, capital, income, gains, revenue, and the last one is clear. So these are the 5 classification of accounts according to the modern rules. So all the accounts are classified in 5 categories. They are assets, liabilities, capital, income, and expense. Clear? तो मॉडर्न रूल्स में how are the rules set? Increase and decrease. For each classifications, the rules are set for increase and decrease. For each classifications, the rule is set by increase or decrease of that
अकाउंट। यस, करेक्ट। इंक्रीज और डिक्रीज। सो एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट। डिक्रीज करना है, डिक्रीज एसेट्स, अगर डिक्रीज कोई भी एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट। तो ये अपने को अभी मॉडर्न रूल्स में डिस्कस करना है। ये रूल्स भी अपने बहुत जन क्लास 11 में पढ़े हैं। क्लास 11 में हो सकता है कि हमने गोल्डन रूल्स का ज्यादा यूज किया है, अप्लाई किया है अकाउंटिंग करते टाइम। वेरी नाइस। बट अभी सीए फाउंडेशन, सीए की जर्नी में अपने मॉडर्न रूल्स ही यूज करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अप्लाई, कन्वीनियंट। वो आगे जब क्लासेस आगे चलते जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है इट इज टू अप्लाई द मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट चाहे आप गोल्डन रूल्स यूज करें अकाउंटिंग करने के लिए या मॉडर्न रूल्स यूज करें अकाउंटिंग करने के लिए, द रिजल्ट विल बी द सेम, इफेक्ट इज सेम। वो आंसर करूंगा मैं, ठीक है, क्लियर है, वही आंसर करूंगा मैं, ठीक है। अभी एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या करना है, डिक्रीज करेगा तो क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट। ये अपने ऑलरेडी बता सकते हैं गोल्डन रूल्स के हेल्प से। गोल्डन रूल्स में एसेट वाज क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट्स, एंड रियल अकाउंट्स के लिए द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कम्स इन मींस व्हाट, एसेट increase. Very nice. Asset increase. Goes out means asset decrease. Clear? Liabilities. Liabilities is opposite of assets. Yes or no? Opposite of assets. So asset के लिए जो rule है, the opposite rule will be for liabilities. यानी liabilities के केस में increase credit, decrease debit. Why? Liabilities increase यानी आपने उधार लिया, तो जिससे आपने उधार लिया, दैट पर्सन, वेरी गुड, ट्रस्ट, क्रेडिट, क्रेडिटर, ट्रस्ट। लाइबिलिटीज के लिए जो रूल है, सेम रूल इज फॉर द कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। टू बी स्पेसिफिक, इट इज इंटरनल लाइबिलिटी, बिकॉज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं, business owner are two separate entities. Business is different from the owner. Owner के personal transactions are not recorded in the books of accounts of the business. यानी ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस उसको उधार समझकर लेता है। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाया, यानी ओनर ने अपना जमा पूंजी कैपिटल बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस उसको उधार समझ के लेता है। उधार मतलब कि बिजनेस ये सोच कर लेता है कि जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तो लास्ट में बिजनेस ये कैपिटल का रुपया प्रोप्राइटर को रिटर्न कर देगा। बिकॉज लास्ट में जब बिजनेस, वेरी लॉजिकल, लास्ट में जब बिजनेस बंद होगा तो सब कुछ बेच बाच कर सारे लाइबिलिटीज को चुका कर ओनर अपना पैसा निकाल लेगा। सो बिजनेस इज रीपे
in the amount of capital liability. Okay, so ये कोचिंग का बिजनेस मैंने क्यों स्टार्ट किया? जब मैं कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, इसमें मेरा कैपिटल लगा, तो मेरे को ट्रस्ट है कि ये बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा एंड आई अर्न प्रॉफिट्स. तो ओनर, when investing money in the business, has this type of trust. Clear? Clear? So owner investing money, capital increase, credit. Hmm. So increase credit to decrease debit. समझ में है ना? क्लियर? दो ही एस्पेक्ट हो सकता है ना. इंक्रीज अगर क्रेडिट है तो डिक्रीज उसका डेबिट है. So debit is coming from the Latin word debitum. Debitum means what is due. Right? Correct. समझ में है ना? ओके. सो लाइबिलिटीज कैपिटल के लिए द रूल इज सेम, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट. एंड ऑपोजिट इज द रूल फॉर द एसेट्स. एसेट के केस में इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट. यस बेटा. कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी. अच्छा, इनकम गोल्डन रूल्स में इट वाज क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स में ऑल इनकम्स आर credited. So whenever an income is earned, income increases credit, decreases debit. Expenses are also classified in nominal accounts. Rule is debit all expenses and losses. So whenever an expense is incurred, expenses increase debit, decrease credit. Clear? अब आपका वो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम वाला क्वेश्चन का आंसर करते हैं. अगर there is no second thought कि prepaid expenses and accrued income are assets, there is no second thought, so they are assets. But if we are classifying according to the modern rules, without any second thought, we classify them as assets because they are assets. Receivable है. Prepaid expenses के case में payment has been made in advance and we are to receive services. Accrued income के case में we have provided services and we are to receive money. So they are assets. But when we need to classify according to the golden rules, they are classified as personal accounts because they are representing to whom the payment has been made in advance or to whom the services has already been given. They're representing a particular person. So a person is involved. So when a person is involved, the classification is always in the personal accounts. Yes, गोल्डन रूल्स में वेरी गुड, वेरी नाइस. गोल्डन रूल्स में रियल अकाउंट में जो भी असेट है वो असेट में पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, डेटर्स. मॉडर्न रूल्स में विदाउट एनी सेकंड थॉट इट इज एन असेट. डेटर्स इज एन एसेट बिकॉज डेटर्स को हम लोग गुड्स बेच चुके हैं, उनसे रुपया रिसीव होना बाकी है.
जब रुपया रिसीव होना बाकी है, रिसीव होना बाकी होता है, तो वो मेरा एसेट होता है। सो मॉडर्न रूल्स में डेटर्स इज एन एसेट, बट गोल्डन रूल्स में डेटर इज अ पर्सन, बिकॉज उधर में पर्सन इज इन्वॉल्व। वेरी करेक्टली अंडरस्टूड कि गोल्डन रूल्स में जो रियल अकाउंट होता है वो सारे एसेट्स के लिए होता है, बट उन एसेट्स में जब कोई पर्सन इज इन्वॉल्व, वी क्लासिफाई इट एज पर्सनल अकाउंट। तो देखो ना, एक चीज मेरे को समझ में आया कि गोल्डन रूल्स में जब क्लासिफाई करने जा रहे हैं, देयर कैन बी लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, इजंट इट? बट मॉडर्न रूल्स में देयर कैन नेवर बी कंफ्यूजन, never be confusion. So that is why modern rule is more easy to apply, because classification is easy. When classification is easy, application becomes easy. Clear? हाँ, उसमें आएंगे, रुको। क्लियर है? तो अच्छा, तो मॉडर्न रूल्स में एसेट, क्लियर, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स, ये 5 क्लासिफिकेशन मेरे को बताओ। एसेट का जो रूल है, सेम रूल और कौन से क्लासिफिकेशन का है? 5 क्लासिफिकेशन है, 5 में से और किसका रूल इज सेम एज दैट ऑफ असेट? हाँ, अरे बाबा, मॉडर्न रूल्स में है अपने, वी आर इन मॉडर्न रूल्स। एसेट का रूल इज, एसेट का रूल एंड एक्सपेंसेस का रूल इज सेम। सो इसको अपने एक पार्टी में रखेंगे। करेक्ट, एसेट एंड एक्सपेंसेस का रूल इज सेम, तो उसको एक पार्टी में रखा। ठीक है। एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड में दूसरे पार्टी में किसको रखेंगे? लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। बिकॉज लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम का सेम रूल है, तीनों का एक जैसा रूल है, बट इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ assets and expenses. तो assets, expenses on one side, liabilities, capital, income on the other side. अपना जो पूरा अकाउंटिंग है, the entire accounting process, the entire accounting process is based on one thumb rule. What is that thumb rule? Rule, the main rule, not rule of debit and credit. The thumb rule is, for every debit, there is a equal, equal to sign, equal, maths equal, there is an equal and corresponding credit. यानी जब भी कोई अकाउंट डेबिट होगा, उसी के साथ कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, एंड दैट टू विथ equal amount. So whenever an account is debited, उसी के साथ दूसरा अकाउंट is credited with an equal amount. This thumb rule is followed in the entire accounting process, which means in accounts, debit is equal to credit. Is equal to means equal to का sign. Debit is equal to credit. Debit is equal to equal to. So can I say that assets, expenses, same rule on one side, cap, liabilities, capital, incomes, ये तीनों का same rule, but opposite to that of asset and expenses. So they are on the other side.
and accounts में debit is equal to credit. So can I place an equation like this? Can I place an equal to sign like this? Yes or no? अब ये इक्वेशन के साथ कैसे इसको और कैसे इसको लिख सकते हैं? एक्सपेंसेस को अगर मैं ऑपोजिट साइड में ले जाता हूं तो माइनस, ये सुनो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बिजनेस का इनकम माइनस बिजनेस का एक्सपेंसेस विल गिव अस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, will give us net profit when will give us net loss when तो नेट प्रॉफिट जब होता है तो नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ ऐड कर देते, देखो इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, सो बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कमाया, तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट हुआ, बिजनेस किसका है? ओनर, एंड ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है कैपिटल, वो कैपिटल पर बिजनेस ने रिटर्न नेट प्रॉफिट कमाया है, तो वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट अपने कैपिटल के साथ ऐड कर देते हैं, लॉस हुआ तो माइनस कर देते हैं। क्लियर? सो राइट, यस और नो? This will give us a consolidated figure of capital. This will give us a consolidated figure of capital. समझ में आया ना? तो this is what we have placed the thumb rule and the rules of debit and credit in the form of an equation. So this is called accounting equation. Accounting is based on the thumb rule debit is equal to credit, एंड इसी पर बेस्ड हमने ये इक्वेशन बना लिया। तो ये इक्वेशन क्या है? लिखो हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेसिकली व्हाट? अकाउंटिंग इक्वेशन इज दिस। क्लियर? सो अकाउंटिंग इक्वेशन में
assets is equal to liabilities plus capital plus income minus expenses. ये जो assets, liabilities, capital, income and expenses है, these are the classification of accounts under the modern rules. So modern rules का दूसरा नाम is accounting equation approach. I just don't pass information. ठीक है? I explain the concept, the reason before I say anything. समझ में? That is why the delay. So it is also called the accounting equation approach. हाँ? नहीं, डाउट्स पूछो, बट मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ. यू आस्क डाउट वेन एवर अ डाउट कम्स फ्री. मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि देखो, इस तरीके से मैं सीरियली पढ़ाता हूँ. पहले मॉडर्न रूल्स के क्लासिफिकेशन का इक्वेशन बनाकर एक्सप्लेन किया, देन बताया कि मॉडर्न रूल्स का दूसरा नाम इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्टाइल ऑफ टीचिंग. यू आस्क डाउट वेन एवर देर इज अ डाउट. ये करेक्ट, उसका आंसर इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. क्लियर? आप डाउट्स पूछो जब भी आपको आ रहा है, देयर इज नो स्टॉपिंग. मैं अपना स्टाइल ऑफ टीचिंग बता रहा हूँ. क्लियर है? क्योंकि अगर मैं पहले बोल देता कि मॉडर्न रूल्स का दूसरा नाम इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, तो क्वेश्चन मार्क एक और आ जाता. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? दूसरा क्वेश्चन आता, व्हाई द नेम अकाउंटिंग इक्वेशन? समझ में आ रहा ना? तो अभी कोई और क्वेश्चन है? नहीं, क्लियर है सारा? ओके. सो हमने बेसिकली आज डिस्कस क्या क्या किया? द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, golden rules, modern rules. Then accounting equation, because accounting equation is also part of the syllabus, which is जिसमें questions मिलेंगे आपको material में, तो वो भी अपने solve करेंगे. So दूसरा, we have understood what is accounting equation, and बीच में ये भी समझा कि accounting is based on the पूरा accounting, the total accounting is based on one thumb rule. For every debit there is a equal and corresponding credit. सिंपल, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, दिमाग में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट की कैलकुलेशंस चलना चाहिए. राइट? अंडरस्टूड? यस, नो? ओके, क्लियर है? सो ये बेसिक्स हमने आज किया है. नेक्स्ट क्लास अपना टारगेट क्या? फर्स्ट वी शैल सॉल्व एन एक्सरसाइज ऑन द classification. Second, we shall solve questions on accounting equation. Then, third, we shall understand how to pass journal entries, how are transactions entered, recorded in the books of accounts by passing journal entries. Clear है? समझ में आया? How was it? Good? Clear है ना? चलो then, this much for today. आज के लिए इतना ही. Thank you so much and bye. Take care.